Hello friends, today I take great pleasure in telling you about two great men who have done extraordinary things in the world and for the world. Stay until the end of the video to discover the existence of these men despite their deaths several years ago. Subscribe to our channel, click on the little bell for other videos, and comment if you really want it. Jean-Jacques Dessalines, a great black man of the Haitian nation, first independent black nation, taking as a drink the disgust to see men mutilated and assassined. Women taken for vulgar sex beasts who sometimes became the mother of a son with fair skin, according to Master Osner Fevry. Murdered in power on October 17, 1806, after only 2 years, by one of the accidental sons of the executioners of the metropolis. Brought behind him several other blacks who have not stopped painting a picture of lasting and extraordinary achievements, important to send the signal that a person can be drowning, white, yellow, red, etc. Today, I'm telling you about one of those blacks, who is Nelson. Who is Nelson Mandela, and how was his private life? Nelson Mandela married 3 times, first to Evelyn Enoko Mays, 1944, from whom he divorced in 1957, then to Winnie Madikizela Mandela, 1958, who is also nicknamed Mama Winnie, a controversial figure of apartheid. The couple divorced in 1996. In particular, following Nelson's nearly 30-year absence from his home because of his imprisonment. Finally, Nelson Mandela remarried at the age of 80 with Graca Machel. Mandela is the father of 6 children and grandfather of 20 grandchildren. Nelson Mandela died during the 2000s. He is committed this time to the fight against poverty and AIDS, a scourge.
long neglected in South Africa, but his health declines after prostate cancer. He suffers from a chronic lung infection probably related to his many years of imprisonment. Its 90th anniversary in 2008 is celebrated as a national holiday. Nelson Mandela died on December 5, 2013 at the age of 95. Nelson Mandela recounted his memoirs in 1995 in A Long Road to Freedom. Autobiography, figured 1995 to 658 pages. The hero of anti-apartheid resistance recounts his story, from his education as a black child to his life imprisonment in 1964. To the creation of the ANC Youth League, his release in 1990 or his election as head of the Republic of South Africa. Nelson Mandela Against Apartheid founded South Africa's first black law firm. Nelson Mandela led nonviolent campaigns until the Sharpeville massacre in 1960. On March 21, 1960, protests were held organized to protest against the compulsory wearing of the passport. The tragedy occurs when the police open fire. There are more than 60 deaths. The government has banned the ANC after the tragedy. Nelson Mandela decides to continue the fight clandestinely and take up arms. It puts in place actions of sabotage and general strike in order to maintain the guerrillas. But in 1962, he was arrested and sentenced to life imprisonment in 1964. His 27 years of incarceration on Robben Island, then Pollsmoor, never tainted his popularity. Nelson Mandela, president and Nobel Prize winner. Upon his release, Nelson Mandela becomes president of the ANC, then negotiates with Frederick de Klerk on the fate of the country. In order to honor Mandela and de Klerk's efforts to end apartheid, the two men received the Nobel Peace Prize in 1993. Then, they agree on a multiracial government, and the first presidential elections give power to Nelson Mandela. He became the first black president of South Africa on April 27, 1994. He then implemented a difficult reconciliation policy before giving way to Thabo Mbeki in 1999. After a single presidential term, Nelson Mandela withdrew from the political life. But he never stopped supporting the ANC. March 21, 1960 had the Sharpeville massacre. Indeed, in protest against the compulsory wearing of the passport, in force since the promulgation of the Pass Law Act. Many events are organized in South Africa, with the encouragement of the African National Congress (ANC) and Pan-African Congress (PAC). But the Sharpeville rally turns to drama when the police open fire. There are more than 60 dead and nearly 180 wounded. The reactions are immediate in South Africa as well as internationally. Other demonstrations of protest will take place, turning into riot and accompanied by general strikes, normally prohibited. Following the event, the PAC and ANC organizations will be outlawed, pushing this second to act clandestinely and to take up arms. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. 21 मार्च 1960 को शार्पविले नरसंहार हुआ था। दरअसल पासपोर्ट के अनिवार्य पहनने के विरोध में पास कानून अधिनियम की घोषणा के बाद से दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (ANC) और पैन-अफ्रीकान के प्रोत्साहन के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कांग्रेस पैक, लेकिन शार्पविले की रैली नाटक में बदल जाती है जब पुलिस खुली गोली चलाती है। 60 से अधिक मृत हैं और लगभग 180 घायल हैं। प्रतिक्रियाएं दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तत्काल हैं। विरोध के अन्य प्रदर्शन आमतौर पर निषिद्ध
दंगों में बदल जाएंगे और सामान्य हड़ताल के साथ होंगे। इस घटना के बाद पीएसी और एएनसी संगठनों को गैर कानूनी घोषित किया जाएगा। इस दूसरे को कड़ाई से कार्य करने और हथियार लेने के लिए धकेल दिया जाएगा। रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका की पहली ब्लैक लॉ फर्म की स्थापना की। नेल्सन मंडेला ने 1960 में शापविले नरसंहार तक अहिंसक अभियानों का नेतृत्व किया। 21 मार्च 1960 को विरोध प्रदर्शन हुए। पासपोर्ट के अनिवार्य पहनने के विरोध में आयोजित किया गया हादसा तब हुआ जब पुलिस ने गोलियां चलाईं। 60 से अधिक मौतें हैं। त्रासदी के बाद सरकार ने एएनसी पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेल्सन मंडेला ने लड़ाई को जारी रखने और हथियार उठाने का फैसला किया। यह तोड़फोड़ और सामान्य हड़ताल की जगह लेता है ताकि गुरिल्लाओं को बनाए रखा जा सके। लेकिन 1962 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1964 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। रोबेन द्वीप पर 27 साल के अपने कारावास के बाद फिर पोल्समर ने कभी भी अपनी लोकप्रियता को नहीं थामा। नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता। अपनी रिहाई के बाद नेल्सन मंडेला अंक के अध्यक्ष बन जाते हैं। फिर देश के भाग्य पर फ्रेडरिक डी क्लार्क के साथ बातचीत करते हैं। रंग भेद को खत्म करने के मंडेला और डी क्लार्क के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए दोनों पुरुषों को 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर वे एक बहुराष्ट्रीय सरकार पर सहमत होते हैं और पहले राष्ट्रपति चुनावों को शक्ति देते हैं। नेल्सन मंडेला को वह 27 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। फिर उन्होंने 1999 में थाबो म्बेकी को रास्ता देने से पहले एक कठिन सामंजस्य नीति को लागू किया। एक एकल राष्ट्रपति के कार्यालय के बाद नेल्सन मंडेला से वापस ले लिया राजनीतिक जीवन, लेकिन वह कभी भी एएनसी का समर्थन करना बंद नहीं करता है। नेल्सन मंडेला कौन है और उनका निजी जीवन कैसा था? नेल्सन मंडेला ने 3 बार शादी की। पहले एवलिंग नोटो को 1944, जिनसे उन्होंने 1957 में तलाक ले लिया। इसके बाद विनी मदेकिज़ेला मंडेला 1958, जो मामा विनी का भी नाम है। रंग भेद का एक विवादास्पद व्यक्ति है, विशेषकर नेल्सन के जेल जाने के कारण। उनके घर से लगभग 30 साल की अनुपस्थिति के बाद 1996 में इस जोड़े का तलाक हो गया। अंत में नेल्सन मंडेला ने 80 साल की उम्र में ग्रेका मैचल के साथ पुनर्विवाह किया। मंडेला 6 बच्चों के पिता और 20 पोते के दादा है। नेल्सन मंडेला की मृत्यु 2000 के दशक के दौरान हुई। वह इस बार गरीबी और एड्स दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय से उपेक्षित एड्स के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई है। प्रोस्टेट कैंसर के बाद वह एक पुरानी फेफड़ों के संक्रमण से पीड़ित हैं, जो संभवतः उनके कई वर्षों के कारावास से संबंधित है। 2008 में इसकी 90वीं वर्षगांठ को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला का 5 दिसंबर 2013 को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेल्सन मंडेला ने 1995 में आजादी के लिए एक लंबी सड़क आत्मकथा फेयार्ड 1995-658 पृष्ठों में अपने संस्मरण सुनाए। रंग भेद विरोधी प्रतिरोध के नायक ने अपनी कहानी 1964 में एक काले बच्चे के रूप में अपनी उम्र कैद से लेकर एएनसी युवा लीग के निर्माण तक की कहानी को याद किया। 1990 में उनकी रिहाई या दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के प्रमुख के रूप में उनका चुनाव। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के संघ में हुआ था। उन्हें रंगभेद के खिलाफ संघर्ष के शीर्ष पर एक राजनेता के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने रहे। उनका जीवन नस्लीय अलगाव के खिलाफ लड़ाई के इर्द गिर्द घूमता रहा। इसके लिए उन्हें 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा। आज वह अब राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन धर्मार्थ के लिए बदल गए हैं।